Hi, good evening, everyone. Today we are going to go ahead and begin with a new reading, and its name is India's Inward Return. Is it warranted? This is given by Chatterjee, Shoumitro, and Arvind Subramanyam. The aim of this reading is to understand what should be the path that India should take during its uh, you know re- during the recovery of India from COVID-19. So all of us know that India, among other countries, had the worst of COVID-19 phase, right? Many of you would have heard of V-shaped recovery also, right? But in this particular reading, the aim is to understand whether the growth, whether the development policies that India should be taking, whether it should be inward or outward, right? But but the question here arises. So if you just think about it, the paper is asking whether you should take an inward approach or an outward approach in the post pandemic period. Pandemic तो हो गया, पर pandemic के बाद जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या वो इनवर्ड होनी चाहिए या आउटवर्ड होनी चाहिए? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि इनवर्ड और आउटवर्ड होता क्या है. वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनवर्ड एंड व्हाट इज आउटवर्ड. ठीक है. सो एन आउटवर्ड स्ट्रैटेजी is any strategy that focuses on forces from outside the economy. अगर मैं इकोनॉमी के बाहर के फोर्सेस पे ज्यादा फोकस करती हूँ, मतलब मैं एक्सपोर्ट बढ़ाने पे, इंपोर्ट कम करने पे, बाहर के लोगों को ज्यादा अपना सेल करने पे फोकस करती हूँ, इफ आई वांट टू इंक्रीज माय जीडीपी थ्रू फोर्सेस आउटसाइड द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एन आउटवर्ड स्ट्रेटजी. एंड इफ आई वांट टू फोकस ऑन डेवलपमेंट विद इन द इकोनॉमी, अगर मैं अपने इकोनॉमी के अंदर से पता करना चाहती हूँ कि कैसे डेवलपमेंट होगी, मतलब आई डोंट वांट टू फोकस ऑन सेलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आई वांट टू मेक माय पीपल स्ट्रॉन्गर. मैं इन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती हूँ. आई वांट टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट. देन दैट इज एन इनवर्ड स्ट्रैटेजी. So an inward strategy focuses on development within the economy. Let me mark it by a different color, beta. This should be visible to you. It focuses on development within the economy. तो अगर इकोनॉमी के अंदर की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो वो हो गई आपकी इनवर्ड स्ट्रैटेजी. और अगर इकोनॉमी के बाहर के फोर्सेस के थ्रू डेवलपमेंट की बात हो रही है, थ्रू आउटसाइड द इकोनॉमी, तो वो हो गई हमारी आउटवर्ड स्ट्रैटेजी. इज दिस क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट. नाउ इवन बिफोर द कोविड हिट इंडिया, जब कोविड आया भी नहीं था, we started talking about this word a lot, which is called आत्मनिर्भर भारत. हमें अपने ऊपर ही बिलीफ रखना है, हमें अपने आप से डेवलपमेंट करनी है. सो इवन बिफोर इंडिया में कोविड आया, we started talking about आत्मनिर्भर भारत. But the point here is that what is this policy all about? Is this policy the correct policy or not? तो जो इस रीडिंग के ऑथर्स हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो हम आत्मनिर्भर भारत पे इतना ज्यादा फोकस करते थे, ये आत्मनिर्भर भारत 3 मिथ्स पे बना हुआ है. इट इज बेस्ड ऑन 3 मिथ्स. व्हाट आर दोस 3 मिथ्स? द फर्स्ट मिथ is that India's domestic market is large and buoyant. मतलब इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत बड़ी है. अगर मैं यहां पर अपना आउटपुट को इंक्रीज करूं, तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए लोगों के पास बहुत इनकम है, राइट? आई कैन इंक्रीज माय जीडीपी बाय इंक्रीजिंग माय मार्केट विद इन इंडिया. ये पहला मिथ है. द फर्स्ट मिथ सेज that the domestic market is very large. This is the first myth, that the domestic market is very large. Iske against, what do the authors say? The author says, no, the domestic market is not large. It is small and the share will remain small. So the authors have to suggest that the domestic market is quite small and that its share shall remain small.
तो यहां पर ध्यान से समझो जरा, मिथ क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज है, एब्जॉर्ब कर लेगी, अगर सप्लायर्स एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे पीपल विल जस्ट बाय इट, डिमांड विल इंक्रीज. दिस इज अ मिथ. And what authors say? No, the domestic market is very small and it has always remained small. Zyada se zyada, it can become medium run, otherwise it will remain small. So that's your first myth. Second myth, it says that India's growth has been driven by domestic market. ये myth है कि जो भी इंडिया का जीडीपी बढ़ा है वो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से बढ़ा है, ना कि एक्सपोर्ट की वजह से या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की वजह से. सो दिस इज अ मिथ. दिस सेज कि जो भी डेवलपमेंट इंडिया में आ रही है वो डोमेस्टिक मार्केट की वजह से, वो डोमेस्टिक मार्केट की वजह से आ रही है, ना कि एक्सपोर्ट की वजह से, ना कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की वजह से. दैट्स अ मिथ. व्हाट्स द एक्चुअल इशू? What's the true thing? That since last 3 decades, पिछले 30 years से, last 3 decades, export performance has played a critical role in India's overall growth. तो जो इंडिया की ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट से ही चल रही है. It is running through the exports. So myth, domestic market small, myth, domestic market large, actually domestic market small. Myth, exports का कोई रोल नहीं है, everything is driven by the domestic market. Actually, exports have a role to play. Third, myth is that India's export prospects are dim. मतलब कि even in the future, इंडिया के एक्सपोर्ट का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, इंडिया कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी. रियलिटी, इंडिया हैज considerable room of increasing export by increasing its market share. So the myth is that we are against that there is nothing in exports. Everything is within domestic market. और क्योंकि ये 3 myth हैं, because we believe that the domestic market is the one that will give us growth, we have therefore been focusing on Atmanirbhar Bharat. But the authors claim that actually the room to grow is not domestically. Market domestically is very small. The room to grow is in exports. So this is what the authors are suggesting, right? So what the authors argue? They say अगर हम inward ही देखते रहे, inward growth को देखते हैं, if we think of growing within India and if we don't focus on outward growth, we will never be able to grow, right? So if we abandon exports, अगर हम exports पे focus नहीं करते हैं and we focus on domestic market, we will give up a valuable opportunity for growth. We will give up on the opportunity to growth. So I loved this line that I want to quote. Abandoning export orientation is akin not just to killing the goose that has laid the golden eggs. It is akin to killing only goose that can lay the golden eggs. ऐसा नहीं है कि 10 चीजें हैं हमारे पास जिसमें से हम एक को हटा भी देंगे तो बाकी के थ्रू हम ग्रो करते रहेंगे. They are saying the only way to grow is through increasing exports. And if you nullify that, अगर आप उसको भी हटा दोगे, अगर एक लौती जो चीज थी, which was to increase GDP through exports, if you remove that also, there is no way that you can grow. So export is the only goose which is giving you golden egg, and you can't just go ahead and kill that also, right? So this paper is all about whether you should go towards inward strategy at all or whether you should move towards an outward strategy, whether you should be focusing a lot more on the exports. This is what we are going to do in this chapter. So I'm going to start this, I'm going to continue this video in the next lecture where we will continue this reading. Okay, thank you.